Assalamualaikum grade 10. How are you? I hope all of you are fine. I hope all of you are doing well and I hope all of you are studying. पढ़ रहे हो. पढ़ना is very important. I am Faiza Nadeem, your English teacher. And today we are going to do the grammar part of Unit 12, Population, Growth and the Food Supply. ठीक है? चलिए फिर हम शुरू करते हैं ग्रामर पार्ट. All right. What is the board saying? The board is saying that we will do all the grammar questions of Unit 12, Population Growth and the Word Food Supplies. ठीक है? सबसे पहला आपका ग्रामर क्वेश्चन है conjunctions के बारे में. What are conjunctions? Conjunctions are conjunctions कनेक्टर्स. ठीक है, अब ये कनेक्टर्स जो है, चाहे ये कनेक्टर्स आपके दो वर्ड्स को कनेक्ट करें, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करें, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करें, बट वेयर एवर दे आर कनेक्टिंग टू थिंग्स दे आर कॉन्जंक्शंस. राइट, यहाँ पर हम आज सब ऑर्डिनेट कॉन्जंक्शंस की बात कर रहे हैं. सब ऑर्डिनेट कॉन्जंक्शंस कौन से होते हैं? सब ऑर्डिनेट कॉन्जंक्शंस वो होते हैं जो एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट कर रहे हो. ठीक है, आपकी बुक में एमसीक्यूज दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर ए का, और आपसे ये कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. आई हैव रिटन द आंसर फॉर यू. What you need to do is to go get your pencil and your textbook like this, like the snap of your finger, and then we are going to start our lesson. ठीक है? Have you brought it? ले आयो? Good. Let's do the first sentence. The first sentence have he could not go home for he had no place to go. अब यहाँ पर आपके पास वहाँ ऑप्शन थी but और दो की. But, दो and for. But the correct answer was for. ठीक है? I've written the answer for you and I've even highlighted it so that it's easier for you to note it down. The next sentence is, although it was hot, he was wearing a coat. ठीक? Subordinate connector की बात की है. ठीक है? Although it was hot, he was wearing a coat is a dependent clause, and although it was hot is an independent clause. I'm wrong. He was wearing a hat is an independent clause, and although he was hot is a dependent clause. So although has connected it was hot with an independent clause, he was wearing a coat. ठीक है, ये connector है, इसने ये independent clause के साथ इस dependent clause को join किया है. Since I had no money, I could not go for shopping. I could not go for shopping is a complete independent clause. ठीक है? I could not go for shopping is a complete independent clause, and the dependent clause, since I had no money, had been connected to this independent clause with the connector or conjunction since. If I had more time, I would help you. I've lost one sentence. He lost his job because he was often late. ठीक है? He lost his job because he was often late. The correct connector over here is because. If I had more time, I would help you. If I had more time is a dependent clause. I would help you is an independent clause, and they are being joined by the connector if. ठीक है? Next topic for the day is adverb clause. What is an adverb? Adverb are the words that describe or modifies a verb. ठीक है? That describe where, how, when, in what manner the action is taking place. Basically, clause is a group of words which has a subject and verb agreement. ठीक है? जिस ग्रुप ऑफ वर्ड के पास सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट नहीं होती वो फ्रेज होता है, और जिस ग्रुप ऑफ वर्ड के पास
सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट मौजूद होती है वो क्लॉज होता है, ठीक है। सो एडवर्ब क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट मौजूद हो और जो किसी भी सेंटेंस के जो एक्शन को टेक प्लेस हो रहा है उसको फर्दर डिस्क्राइब करें, वो एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं, ठीक है। आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न्ड फॉर मरी, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप इस सेंटेंस को एडवर्बियल क्लॉज में टर्न करना है, ठीक है। आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम मरी को अगर आप आई को माई में टर्न कर देते हैं तो ये जो है सिंस माई रिटर्न फ्रॉम मरी आपका एडवर्बियल क्लॉज बन जाता है, ठीक है। इफ यू वांट टू टर्न दिस सेंटेंस इनटू इट्स एडवर्बियल क्लॉज you will add my return from Murray in order to turn this sentence into the adverbial clause. Next is I am glad that he has recovered from his illness. ठीक है, I am glad at his recovery from his illness. ये आपका एक complete sentence है, इसकी जगह हमने adverbial clause लगाना है। adverbial clause लगाने के लिए हमने at his recovery from his illness इसको इस तरह से टर्न कर दिया है, ठीक है। आपके पास सेंटेंसेस पड़े हुए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है और उनको रीराइट करना है। 2 सेंटेंसेस हमने अभी किए हैं, बाकी के सेंटेंसेस हम आगे चल के करते हैं। तो लेट्स डू द सेंटेंस नंबर 3। ऑलराइट, ऑन द टॉप इज सेंटेंस नंबर 3। As soon as I saw the cobra, I ran away. Seeing the cobra, I ran away. ठीक है, seeing बस समझाया था मैंने आपको adverbial clauses का जब मैंने लेक्चर किया था उसमें, ठीक है। seeing is believing वाला, तो seeing the cobra, I ran away. This sentence into its adverbial clause. Next is he may go home after his work is finished. If you want to turn the next sentence, the next clause into its adverbial clause, so you can write this, he may go home after finishing his work. ठीक है, यहाँ मैंने फुल स्टॉप भी डाला है, मैंने फिनिशिंग भी लिखी है और मैंने वो अंडरलाइन भी किया है। वो फ्रेज या वो ग्रुप ऑफ वर्ड या वो क्लॉज जिसको आपने एडवर्बियल क्लॉज में टर्न करना है। I did not pay her as I had no money with me. Being penniless, I did not pay her. ठीक है, as I had no money with me, इसको हमने सिंपल एडवर्बियल क्लॉज being penniless से चेंज कर दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ है, कॉपी डाउन कर लो। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो आपका गिवन सेंटेंस है उसमें एडवर्बियल क्लॉजेस को फाइंड आउट करना है, डिस्कवर करना है, हाईलाइट करना है और मेंशन करना है कि वो कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। टाइम, प्लेस, मैनर, कंडीशन, व्हाट, ठीक है। The first sentence has been done. In fact, all the sentences have been done for you. I'm going to read the first sentence and explain it. The frightened child ran as fast as he could. As fast as he could is the adverbial clause. और वो कौन सा adverb है? Adverb of manner. ठीक है? Even if they hurry, they may not get there on time. Even if they hurry is the adverb of condition. ठीक है? Even if वो जल्दी कर लेंगे, they might not get there on time is a complete clause. ठीक है? is a complete sentence. हमने adverbial clause क्या लगाया था? Even if they hurry. This is the adverb of condition. The player is out of the match because he has hurt himself. Adverb of reason. Why did the player leave the match? Because he has hurt himself. So this is the adverb of reason. If she recovers quickly, she will join the team. Adverb of condition. If she has recovered quickly, she will join the team. This is the adverb of condition. The speaker was so absorbed in his speech that he forgot the time. The speaker was so absorbed that he forgot
what the time is. This is again the adverb of result. क्या हुआ है कि वो टाइम भूल गया, वो अपनी स्पीच में इतना बिजी था, इतना इन्वॉल्व था. 5 sentences हो गए हैं. There are 5 more sentences. Let's quickly go on to the 6th sentence. She switched on the television so that she could listen to the news. Adverb of purpose. The reason for switching on the television was that she wanted to hear the news. They left before the concert ended. Adverb of time. When did they leave? Before the concert ended. ठीक है. He acted as if he owned the car. Adverb of manner. The way he acted was as if he was the owner of the car. And then where the road bends dangerously, be more careful. Adverb of place. You must be careful where the road is bending dangerously. He will get a good job when he graduates. Adverb of time. When he will get a good job? When he graduates. ठीक है. ये जो adverbs होती हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इनकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि ये connectors या conjunctions या subordinate conjunctions के बाद आते हैं. ठीक है. अभी मैंने डिस्क्राइब किया है what are subordinate conjunctions that join one dependent clause to an independent clause. ठीक है. adverb आपको मैंने हाईलाइट करके बताया है, adverb आपको मैंने क्विक थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करके बताया, बिकॉज फॉर दिस यू हैव टू वॉच माई adverb lecture. ठीक है. Let's move on to the last question of the day. The last question of the day over there in your book is the matching. 2 कॉलम्स बने हुए हैं और उन्होंने आपसे कहा है कि आप इन सेंटेंसेस को ऐसे मैच करें कि वो मीनिंगफुल बन जाएं. मैंने आपके लिए बोर्ड पे सॉल्व कर दिया है. ठीक है. क्विक pick up your pencil and match. The rain started while I was driving home. I wrote many books before I was rewarded the literature prize. They had to cancel the meeting because the director did not show up. You won't succeed if you don't try. Although it was raining, he went without an umbrella. So I have done all the matching. It's on the board. I'll move it one side and I hope that you will quickly match all the sentences because I was fast in reading the sentences up. Unit 12 के हमने की आज सारी ग्रामर. हमने क्विक रिवाइज की conjunctions. ठीक है. सबऑर्डिनेट conjunctions to be precise. उसके बाद हमने किए adverb clauses. उनको हाईलाइट किया, उनको फाइंड आउट किया और उनका रीजन बताया कि ये adverb clauses कौन से हैं, कहाँ पर हैं और किस तरह यूजेज होते हैं. I hope you have done all the grammar part of this unit. Now only creative writing part, that is PC writing and a factual or a non-fiction essay is left to be written. Inshallah we'll do in the next lecture. By that time, quick revise all the chapter, learn it, learn the question answers, make sure you learn the vocabulary meanings, make sure you are comfortable in constructing sentences and you have done all the grammar part. ठीक है. मुझे अल्लाह हाफिज़ कहिए. इंशाल्लाह वील मीट टुगेदर. अपना बहुत ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए. अल्लाह हाफिज़.